Hello friends and welcome to Hitbullseye. My name is Manish and this is your weekly dose of current affairs, the bulldoze, and this time it is for the first week of May 2023. बहुत कुछ important हुआ है इस week में, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो सारी important news क्या हैं. So we'll try to be brief, but we'll try to cover as broad topics as possible. Let's get started. First, Indian Army has inducted first women officers into the Regiment of Artillery. 5 women have been inducted into the Artillery Regiment of Indian Army, which is a historic first because it is the first time women have gotten into this regiment, which is a command post basically. Mr. A.K. Mohanty has been appointed as the new Atomic Energy Commission chairperson, the AEC, which is effectively the atomic body of India, the atomic policy making body of India, Atomic Energy Commission. Next, Satwiksairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty, the two wonder boys of Indian badminton, have won yet another gold in Badminton Asia Championship, which is a historic first as well. So we will see what is the first that they have achieved. Next, Mr. Ding Liren, the Chinese chess master, has become world's first world chess champion from China. China से पहली बार कोई world chess champion बने हैं. That is Mr. Ding Liren. Extremely important news from the sports perspective. We have 2 world champions today, in fact 3 if I also include Mr. Neeraj Chopra. Anyway, India to join international climate action in civil aviation from 2027. So we'll discuss about it कि international civil aviation में emissions को कम करने के लिए जो efforts हो रहे हैं उसमें इंडिया भी अब participate कर रहा है. Next, ASEAN India Maritime Exercise AIME 2023, यानी कि ASEAN और इंडिया में maritime exercise. So ASEAN is an 11-member body of Southeast Asian nations. Next, artificial intelligence के godfather Geoffrey Hinton ने Google quit कर दिया है, and he has expressed apprehensions at the growth of artificial intelligence in the way it is happening, which is an alarming situation for all of us as well. So we will take a look at what he said. Next, World Press Freedom Index 2023 has been launched. उसमें देखेंगे इंडिया की रैंकिंग क्या है. Imprisoned Iranian female journalists have won a top UN prize. 3 female journalists जो ईरान में imprisoned हैं उनको एक UN का top prize दिया गया है. देखेंगे कौन सा prize और क्यों दिया गया है. So second world champion, as I told you, 3 world champions के बारे में हम बात करेंगे. Ding Liren, Luca Brecel and Neeraj Chopra. So Luca Brecel has won snooker world championship title and Neeraj Chopra has won Diamond League 2023. तो 3 world champions के बारे में हम बात करेंगे. Then Odisha has extended Indian hockey team sponsorship till 2033. और अगले 10 साल के लिए ओडिशा की गवर्नमेंट इंडिया की मेंस और विमेंस हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर करेगी. अमिताभ कांत, who is a renowned officer of Indian Administrative Service और अभी ये G20 के शेरपा हैं इंडिया के, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के बारे में बात करेंगे. Ajay Banga has been confirmed as the next president of the World Bank, another person of Indian origin occupying a top position in a world body, World Bank. तो उसमें अजय बांगा की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई है. फोर्ब्स ने दुनिया के 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट लॉन्च की है, जिसमें देखेंगे कि टॉप 5 या टॉप 3 पे कौन से एथलीट्स आते हैं. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है गोवा में. सो विल टेक अ लुक एट दैट. एंड फाइनली, किंग चार्ल्स III इज नाउ द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली. इनकी कॉरोनेशन हुई है. तो सारी न्यूज आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है. लेट अस टेक अ क्विक लुक एट ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट इज Indian Army has inducted first women officers into the regiment of artillery. So these are those 5 women officers, as you can see. So these 5 women officers are Lieutenant Mehak Saini, Lieutenant Sakshi Dubey, Lieutenant Aditi Yadav, Lieutenant Payas Modgil and Lieutenant
Akanksha. So all of them are lieutenants in the Indian Army, and they have joined the artillery units after their training at Officers Training Academy Chennai, OTA Chennai से इनकी ट्रेनिंग के बाद ये ज्वाइन करेंगे. So what is the regiment of artillery? It's a major combat support arm of Indian Army, and it handles various gun systems including Bofors howitzers, Dhanush, M777 howitzers and K9 Vajra self-propelled guns. And this is a huge step towards induction of women into command units or command positions in the Indian Army. And all of this has been made possible after the Supreme Court ruling on two things. One, providing permanent commission to women in the armed forces, and second, to give them command positions as well. So, historic first. Mr. A.K. Mohanty is the new chairman of Atomic Energy Commission. So, जो भी Atomic Energy Commission का chairman होता है, he or she is the de facto head of India's nuclear program. So he will be heading India's nuclear program for the next few years, and anyone who is the chairman of Atomic Energy Commission is also secretary in the Department of Atomic Energy. So this is a position which is a sort of an ex officio position. So anyone, you can say that anyone who is secretary in the Department of Atomic Energy is ex officio chairman of Atomic Energy Commission as well. And generally, I would say always a person from scientific background is appointed to this position. So it's not necessarily and not always for an IAS officer, which they generally do in all of the departments. Secretaries are IAS officers, but here, since it is a department requiring extreme expertise in science and tech, a person who is a scientist is always appointed on this position. और इनकी appointment clear की है Cabinet Committee on Appointments ने, which is headed by the Prime Minister of India. Satwiksairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty have won yet another gold medal for India, and this is a first. So what is the first? First Indian men's doubles pair. So singles एक पहले जीत चुके हैं इंडियन, लेकिन इंडिया का पहला डबल्स पेयर है जिसने गोल्ड मेडल जीता हो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में. So first singles जीतने वाले थे दिनेश खन्ना in 1965, way back in 1965. उस वक्त उन्होंने जीता था, and this is only the second gold medal ever. तो पहला गोल्ड मेडल सिंगल्स में जीता था दिनेश खन्ना ने, और अब सेकंड गोल्ड मेडल जीता है डबल्स में इन दोनों ने, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी. And they have been winning a lot of medals as doubles in badmintons, and you should know their names and that they are associated with badminton. Ding Liren is the new chess champion. He is a Chinese and he has defeated a lot of stalwarts, bigwigs in chess to occupy this position. So he has defeated Russia's Ian Nepomniachtchi and also all the other top players. And last year the world champion was Magnus Carlsen of Norway. So the 16th world champion was Magnus Carlsen, and now the 17th world chess champion is Ding Liren. So this is the name you should remember at least for the next 1 year until we get a new chess champion. So Ding Liren is the world champion this time. India to join international climate action in civil aviation from 2027. Basically, we keep talking about fighting climate change, and we are doing a lot of those things as far as our industry emissions are concerned, vehicular emissions are concerned, which is good, it should be done. लेकिन सिविल एविएशन भी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम होता है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल काफ़ी ज़्यादा दुनिया में यूज़ होता है बिकॉज देर आर ऑफ कोर्स थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स, तो उसमें एमिशंस को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो बनाया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने, ICAO ने, और उस फ्रेमवर्क का नाम है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, विच इज कॉर्सिया. तो नाम से पता चलता है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कि कैसे कार्बन को ऑफसेट करना है, एमिशंस को रिड्यूस करना है इंटरनेशनल एविएशन में, और उसके लिए लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स हैं LTAG.
long term aspirational goals, because civil aviation is a very important aspect of globalization and economic growth, और वो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल है, ऐसा नहीं है कि हमने अचानक से फ्लाइट्स कम कर देनी है या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो वी हैव लॉन्ग टर्म गोल्स कि कैसे सिविल एविएशन में हमें जो है रीन्यूएबल्स को लेके आना है। फ्रॉम 2027 इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये प्रपोजल तैयार किया है दैट वी आर ज्वाइनिंग दिस। The global body, that is ICAO, has adopted several key aspirational goals, including a 2% annual fuel efficiency improvement through 2050। हर साल जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी 2% से बढ़ाने का टारगेट रखा गया है अंटिल 2050। हर साल 2% फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ होगी एंड नेट जीरो बाय 2050। तो सिविल एविएशन में नेट जीरो का टारगेट है 2050 तक का, विच इज अ क्वाइट एन एम्बिशियस टारगेट आई वुड से। सो दीज आर गोल्स आर अंडर कॉर्सिया एंड LTAG, राइट। तो ऑफसेटिंग इंडिविजुअल एयरलाइंस करेंगी। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर। सो इंडिया हैज जॉइंड दिस और हैज वाउड टू जॉइन इट फ्रॉम 2027। तो ये एक न्यूज है कि सिविल एविएशन में कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो फ्रेमवर्क है इंडिया ने उसे ज्वाइन कर लिया है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। नेक्स्ट, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें कि कुल मिलाकर 11 मेंबर्स आते हैं। तो आसियान और इंडिया मिलके मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एम 2023। तो इसके दो फेजेस होंगे। वन इन द चांगी नेवल बेस विच इज इन सिंगापुर, is the name of their airport also, Changi Airport. And second is the South China Sea, in the South China Sea, which is quite significant because South China Sea is a sort of regional dispute mess, if I call it, because China is having dispute with 6 to 7 countries of Southeast Asia in the South China Sea region, and there is a lot of muscle flexing there as well. तो वहाँ पे अगर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब काफ़ी implications हैं इसके। इसका पर्पस है ताकि इंडिया और आसियान कंट्रीज की जो नेवीज हैं वो साथ में काम कर सकें। सो आसियान कंट्रीज इंक्लूड इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, all these countries are ASEAN countries, and the latest member to join it was East Timor, जिसके बाद ये 11 कंट्रीज हो गई हैं। इसी के साथ साथ IMDEX भी यहाँ पे कंडक्ट हुई, विच इज इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। तो ये सब कुछ इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एम इज आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। AI गॉडफादर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाने वाले जॉफ्री हिंटन ने गूगल को क्विट कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से हम न्यूज सुन रहे हैं कि चैट GPT किस तरह से कमाल दिखा रहा है। पीपल हैव नाउ गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू, बट अ पर्सन who is credited with significant improvements in artificial intelligence, in fact इन्होंने ट्यूरिंग अवार्ड जीता हुआ है, which is the world's highest award in computing। एलन ट्यूरिंग के नाम पे अवार्ड है, ट्यूरिंग अवार्ड। तो ये उसे दिया जाता है जिसने कंप्यूटिंग में कुछ, इट्स नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बेसिकली, बिकॉज कंप्यूटिंग में नोबेल नहीं होता है। सो ही हैज सेड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी डेंजरस एंड ही हैज क्विट गूगल because of that. So that is a big alarm as far as AI is concerned, but we should not be too pessimistic as well. He may have his own reasons, but it cannot be denied that there has to be an ethical debate around artificial intelligence, that it should not eat into the jobs. आज की डेट में दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो एग्जिस्टिंग जॉब्स को ही खाना शुरू कर दे, दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट ही हैज हिंटेड एट। सो द वर्ल्ड, the scientific community needs to debate this really from ethical point of view as well. We might have to take a step back if need be, because last month ये भी हमने न्यूज़ देखी थी
कि बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स ने एक लेटर, ओपन लेटर लिखा था कि चैट जीपीटी 4 का जो वर्जन है वो लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इट माइट cause it might imperil millions of content creators jobs. तो ऐसा कुछ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमें फायदा दे, ना कि वो हमारी जॉब्स को imperil करे. World Press Freedom Index has been launched and India's rank is one of the worst it has ever been. Out of 180 countries, India's rank is 161. 161 position है. तो इस रैंकिंग को लॉन्च करता है आरएसएफ, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. सो दिस वॉचडॉग रिलीजेस दिस रिपोर्ट और इसमें इंडिया का रैंक 161 आया है. टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो नॉर्वे इज एट नंबर 1, आयरलैंड इज एट नंबर 2 एंड डेनमार्क इज एट नंबर 3. These are the top 3 countries: Norway, Ireland and Denmark. Bottom 3 की बात करें तो वियतनाम, China and North Korea are the bottom 3 countries. So China and North Korea we can expect. There is no media freedom as at all. They are complete dictatorships. And Vietnam also. These are the bottom 3. And we are having 161 position, which is worse than our neighbors Bhutan, Sri Lanka, Pakistan. Even Afghanistan से भी बुरा है हमारा रैंक इस बार. Their criteria is 5 different factors: political indicators, economic indicators, legislative indicators, social indicators and security indicators. So आपको ये याद रखना है कि कौन इसको लॉन्च करता है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. इंडिया का रैंक 161, टॉप 3 कंट्रीज, बॉटम 3 कंट्रीज, and these are the 5 indicators. Okay, so UNESCO has marked World Press Freedom Day, जो कि 3 मई को मनाया जाता है, by giving annual World Press Freedom Prize. तो World Press Freedom Prize जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस फ्रीडम प्राइज माना जाता है, वो इस बार दिया गया है इन 3 जर्नलिस्ट्स को. These are the 3 female journalists of Iran who are in prison right now. Their names are Niloufar Hamedi, Ela Mohammadi and Nargis Mohammadi. They have been in prison for their work in reporting on human rights abuses in Iran. तो ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने रिपोर्टिंग की एंड दे आर इन जेल बिकॉज ऑफ दैट. इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इन लोगों को दिया गया है. और इस बार का थीम था शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स. थीम है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट. Luca Brecel has won snooker world championship title. So Mr. Luca Brecel he is, and world snooker championship इन्होंने जीती है, जो कि एंड ही इज अ बेल्जियन. तो ये बेल्जियम से हैं और ये इनका पहला वर्ल्ड टाइटल है. सो डिंग लेरेन चेस में वर्ल्ड चैंपियन एंड लुका ब्रेसेल स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन. इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के सबसे फेमस जो स्नूकर प्लेयर हैं, ही इज मिस्टर पंकज आडवाणी. Odisha has extended Indian hockey team sponsorship till 2033. 2033 तक अब जो इंडियन हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर करेगी वो ओडिशा की गवर्नमेंट करेगी. दिस इज अ यूनिक फिनोमिनन. Even I was surprised when I read about this a few months back, that Odisha government formally sponsors the hockey teams of India. Men's team भी, women's team भी, senior as well as junior. I don't know what's the reason behind it, but it is the Odisha government that has been sponsoring all these teams and they promote hockey a lot. तो उन्होंने 2023 तक पहले ये उनके पास स्पॉन्सरशिप थी, अब वो 10 साल और एक्सटेंड कर दी है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, दैट ओडिशा इज स्पॉन्सरिंग इट. अमिताभ कांत ने नई बुक लिखी है, मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise. So tracing Indian economy's 75 years from dependence to sort of self-reliance, उन्होंने बुक लिखी है और जिसमें उन्होंने मेड इन इंडिया को थीम रखा है. अमिताभ कांत एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं. नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. वो इसके सीईओ रह चुके हैं और अभी ये
इंडिया के G20 समिट के शेरपा हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन द G20 राइट नाउ। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको गवर्नमेंट ने दी हुई है। एंड ही इन दिस बुक is celebrating that in the last 75 years since independence, we have surpassed UK to become the 5th largest economy, and we are well on our way in the next 4 to 5 years to surpass even Germany and Japan to become the 3rd largest economy in the world, just behind US and China. तो वो सारा उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। Mr. Ajay Banga is the new president of World Bank, yet another Indian occupying a top position in a top institution. तो वर्ल्ड बैंक के ये नए प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं, एंड ही माइट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन बट ही इज नॉट एन इंडियन। वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन यूएस में रहते हैं, एंड ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। मिस्टर अजय बांगा 14th प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के, और इन्होंने डेविड मालपास को सक्सीड किया है। सो डेविड मालपास इज द करंट प्रेसिडेंट and Mr. Ajay Banga is going to succeed him. World's 10 highest paid athletes में number 1 position, and in fact top 3 तीनों ही football players हैं. So number 1 is Cristiano Ronaldo, number 2 is Lionel Messi, and number 3 is Kylian Mbappe. All the 3 top players in the world in football are also the top paid athletes. So Cristiano Ronaldo $136 million इनका रेवेन्यू था एक साल का, लायनल मेसी 130 मिलियंस, एंड किलियन एम्बापे 120 मिलियन। इसके बाद जो फोर्थ हैं दैट इज लेब्रॉन जेम्स फ्रॉम बास्केटबॉल। तो टॉप 3 प्लेयर्स फुटबॉल के हैं, एंड हियर दे आर। आई थिंक दे आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉलर्स एज वेल। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ मीट इन गोवा। इस साल इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रिजाइड कर रहा है, चेयर कर रहा है, और उसकी अलग अलग मीटिंग्स अलग अलग जगह पे हो रही हैं। इसकी जो समिट है वो जुलाई में होने वाली है न्यू दिल्ली में, लेकिन उससे पहले जो बाकी मीटिंग्स हैं जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये सब हो रही हैं। सो दिस वाज द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग दैट टुक प्लेस इन गोवा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एक याद रखना है, वो पहला तो ये वेन्यू गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और दूसरा कि इस साल का जो इंडिया का थीम है एससीओ का, दैट इज सिक्योर SCO, secure SCO. नीरज चोपड़ा हैज वन द डायमंड लीग। तो दोहा जो कि कतर की कैपिटल है, वहां पे डायमंड लीग हुई जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इनफैक्ट इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को भी हरा दिया इसमें। सो नीरज चोपड़ा हैज वन द दोहा डायमंड लीग 2023। And finally, the last news, King Charles III is now officially the new King of England. Although it might sound quite cliched and quite old school, old fashioned that we are coronating a king, that too in one of the supposedly well civilized and most advanced countries in the world, United Kingdom. But as the tradition goes, after almost 70 years, there is a coronation in Britain, because 70 साल पहले his mother Queen Elizabeth II was coronated. So now he has been coronated, and as you can see they are wearing those crowns of king and queen, and that has the Kohinoor diamond in the crown, right? So Westminster Abbey London में इनकी coronation हुई है, and whoever becomes the king or queen is also the protector of the Protestant religion and as well as the head of the Church of England. So it's a sort of an ex officio position in England. Right? So that is all for this week. Quite a lot of news, but all of them very important. I hope you liked the video. If yes, then please give it a thumbs up, and also mention any of your concerns or any of your observations in the comment section below. Thank you so much. See you next week. Take care.